शांत लाइव जा रहे हैं साइलेंस Hello and welcome to OneCricket. With me, I am Gargi Raut, and with me is Devashish Sarangi. We are just 2 days away from the much-awaited border Gavaskar Trophy. हमने पिच देख लिया है, काफी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ गए हैं. देवाशीष, क्या लगता है आपको पिचेस कैसी है? और नागपुर की तो रेपुटेशन ही ऐसी है कि 1-2 दिन में पिच खराब होने लग जाती है. प्लस ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया की अगर देखें जिस तरीके से वो तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, अश्विन का रेप्लिका लेके आए हैं वो, अक्षर जडेजा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए लेफ्ट आर्मर्स लेके आए, वो भी लोकल स्पिनर्स, और जाके बैंगलोर में जाके उन्होंने प्रैक्टिस की है. क्या लगता है आपको? पिच तो ड्राई होगी जी, जैसा आपने बताया कि रेपुटेशन है नागपुर विकेट की, तो ड्राई विकेट वी आर एक्सपेक्टिंग ए ड्राई विकेट, और ये स्टीव स्मिथ ने कंफर्म भी किया है. तो ही इज ए ग्रेट पिच रीडर, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज ए ग्रेट बैट्समैन. सो ए बैट्समैन ऑलवेज इज अ वेरी गुड पिच रीडर ऑफ द पिच. सो एज ही हैज रिवील्ड कि ड्राई विकेट होने वाली है, तो हम मान के चलते हैं कि विकेट ड्राई होने वाली है एंड स्पिनर्स विल एंजॉय बॉलिंग एट दिस वेन्यू. एंड जैसा प्रिपरेशन के बारे में बात किया आपने, ऑस्ट्रेलिया नाखुश थी क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने वो आए थे तो उनका कहना है कि हमने उनको ग्रीन देख दिया था, जबकि मैच में हमने एकदम ड्राई विकेट डिश आउट कर दिया. लेकिन शायद उसी वजह से उन्होंने सेपरेटली प्रैक्टिस करने का सोचा. एंड ठीक है, अभी उनको जो कंफर्टेबल है तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे. एंड दे लुक वेरी प्रिपेयर्ड आई थिंक, एंड दे विल गिव इट वेरी टफ चैलेंज टू द इंडियन टीम. जी बिल्कुल. और अभी काफी डायलेमा चल रहा है. अगर इंडियन सिलेक्शन की बात करें, केएल राहुल, गिल, केएस भारत, ईशान किशन, इतने सारे लोग हैं. वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि केएल राहुल के साथ अगर कंपटीशन में देखें ओपनिंग में, तो गिल इज डूइंग सो वेल. प्लस केएस भारत आ चुके हैं डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके. ईशान किशन भी और डोमेस्टिक में भी वो काफी कीपिंग करते हैं. तो अगर इंडिया एक सिक्योर कीपर की तरफ देखते हैं तो कौन होना चाहिए, केएस भारत या ईशान किशन? आई थिंक केएस भारत होना चाहिए, क्योंकि केएस भारत का रेपुटेशन ये है कि वो अच्छे कीपर है. और दूसरी बात ये है कि वो पहले से इन लाइन है. जब ऋषभ पंत नहीं थे तो हम केएस भारत को ट्रस्ट किए थे, टीम में लाए थे उनको. तो आई थिंक वो फर्स्ट चॉइस रिप्लेसमेंट होना चाहिए ऋषभ पंत का. एंड बात केएल राहुल की है तो केएल राहुल एंड गिल के बीच में कंपटीशन है, लेकिन आई थिंक इंडिया दोनों को कैसे भी प्लेइंग 11 में अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों का इम्पोर्टेंस है. एंड दोनों फ्रंट रनर्स है अहेड ऑफ सूर्य कुमार यादव टू प्ले फॉर इंडिया इन टेस्ट. जी, और सूर्य कुमार यादव भी उनका तो मेंशन करना भूल. एक्चुअली आई डोंट सी हिम डेब्यूटिंग इन दिस गेम. कुड बी. और डेब्यू की बात की जाए तो स्कॉट बोलैंड अपना पहला अवे गेम खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में. वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट. जी बिल्कुल. जॉश हेजलवुड की कमी दिखेगी ऑस्ट्रेलिया को? कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है एंड ही हैज प्लेड इन इंडिया इन द पास्ट. सो हिज पार्टनरशिप विद पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुई है इन द पास्ट. सो कमी तो दिखेगी, लेकिन बोलैंड इज अ वेरी कैपेबल बॉलर. एंड वो उनकी एक खासियत है कि वो जहां जाते हैं तो एकोमोडेट कर जाते हैं वो इजीली. तो ये देखना पड़ेगा कि वो कैसा करते हैं इंडिया में. और हमने ही विल बी रिवर्स स्विंग एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही डज. आई थिंक थोड़ा सा हिंट्स मिल ही गए थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, तो स्कॉट बोलैंड काफी बैटिंग काफी एक्टिव थे. और वन क्रिकेट के चैनल पे काफी सारे वीडियोस भी है उनकी बॉलिंग करते हैं प्रैक्टिस सेशंस के. रोहित शर्मा का भी प्रैक्टिस सेशन का हमारे पास ट्रेनिंग सेशन के काफी सारे वीडियोस हैं. लेट्स टेक अ मिनट एंड हॉल्ट एंड लेट्स वॉच.
और जैसे हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, काफी सारे जो हमारे इंडियन बैटर्स हैं, दे आर बैशिंग इट आउट अगेंस्ट द स्पिनर्स. काफी प्रिपरेशन चल रही है. मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे हैं. अब देर इज ऑल्सो इधर भी डायलेमा आता है इंडियन सिलेक्टर्स के पास, क्योंकि उमेश यादव है, मोहम्मद सिराज, शमी. क्या देखते हैं आप कॉम्बिनेशन इसका? एक तो खुशी होती है कि क्योंकि एक जमाना था जब हमारे पेस बैटरी मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे, और आज इतना ज्यादा ऑप्शन है कि हम सोच रहे हैं कि किसको खिलाएं किसको बिठाएं. ठीक है, इतने क्वालिटी ऑप्शंस हैं. सो द क्रेडिट मस्ट गो टू द मैनेजमेंट फॉर डेवलपिंग सच ए फॉर्मिडेबल पेस रिजर्व, पेस बैटरी. एंड अगर लॉजिकली देखें तो उमेश यादव खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करते हैं एंड उनका होम ग्राउंड भी है. जी. और जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम नागपुर इज आवर कोरेस्पोंडेंट, वन क्रिकेट के कोरेस्पोंडेंट है और जर्नलिस्ट है संदीपन बैनर्जी. हेलो संदीपन सर, हाउ आर यू? एंड लेट अस नो हाउ इज द एटमॉस्फेयर इन बैक इन नागपुर. Hi, first of all, I was listening to you guys and you guys have pointed out a very important factor, reverse swing. क्योंकि इस सीरीज में हम सभी बात कर रहे हैं स्पिन का, लेकिन if you have seen इंडिया जो लास्ट सीरीज घर में हारी थी back in 2012 against England, in that series Anderson and people like Steve Smith played an important role with the with the old ball, and that was through reverse swing. So I actually asked this question to KL Rahul in the press conference, and they said they are also gearing up for the not only for the spin challenge of the Australian team, but for reverse swing. They are also trying to counter the reverse swing factor as well. But yeah, I'm good. Happy to be back to the Orange City. But unfortunately this time it is going to be a red ball test, not a pink test. But yeah, I'm good. And the atmosphere is good here. People are curious. There is a demand for tickets over here. The ground actually is a little bit far from the venue. Yes. Hello, am I audible? Yes. And, yes, you are. And you have been following, the practice session closely. Who's looking the most solid when you see the Indian squad? I think we have lost connection with Sandeepan sir. But anyway, we will still go on with the conversation we were having. Reverse swing, Sandeepan ने भी बात की उस बारे में. Would you like to add more on that? बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स स्विंग जो होता है एसजी में वो उमेश यादव का एक मतलब बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है एंड ही हैज डन एक्सीडिंगली वेल इन इंडिया. बट शमी का अगर बात की जाए तो डिस्पाइट बीइंग ए सीम बॉलर वो भी रिवर्स स्विंग बॉल को अच्छा कंट्रोल करते हैं. बट सिराज का ऐसा केस मैंने देखा नहीं अभी तक, और नागपुर ट्रैक में सीम मूवमेंट इतना मिलेगा नहीं. जो 3/4 डिलीवरी डालते हैं सिराज, तो वहां उनको कितना मदद मिलेगी आई एम नॉट श्योर. दैट्स व्हाई आई एम बैकिंग उमेश टू प्ले. राइट. और अगर जब पिच की बात आती है तो द काइंड ऑफ पिच वी हैव, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ बाउंस. मतलब पेसर्स को तो उतना सपोर्ट मिलने से रहा इस पिच से, क्योंकि काफी फ्लैट विकेट है. अब तो स्टीव स्मिथ ने भी कह दिया है कि बहुत फ्लैट विकेट है, कुछ भी बाउंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, टूट जाएगी. तो नेटवर्क ग्लिच है संदीपन जी की तरफ से, वो थोड़ी देर में फिर से ज्वाइन आएंगे हमारे साथ, लेकिन तब तक हम बात करते रहेंगे इस बारे में. तो पिच की बात कर रहे थे हम. काफी ड्राई विकेट है, नो सपोर्ट फॉर फास्ट बॉलर्स. यस. तो उसी वक्त हमारे पास मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इंडियन सिलेक्टर्स के लिए, कि दे पिक द राइट पेसर्स जो अपना लाइन एंड लेंथ से ज्यादा हिले ना, डजंट गिव अ लॉट ऑफ रूम टू द बैटर्स. तो वही बात है, दोनों का एक्सपीरियंस है, उमेश यादव एंड मोहम्मद शमी. तो मेरे हिसाब से ये दोनों खेलना चाहिए. बाकी सिराज का तो टैलेंट है, वो खेलें तो अच्छा करेंगे, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे. जी बिल्कुल. और विल हैव अ लुक एट द पिच नाउ.
जी, और देख सकते हैं हमारे पास ऑडियंस भी जुड़ी है थोड़ी बहुत। ड्रीम टीम सुपर जायंट्स हमें पूछ रहे हैं व्हाट केएल राहुल मतलब हिट बैटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, इनका प्रैक्टिस सेशन कैसे दिख रहे हैं। तो अगर हम देखें जो हमारे कोरेस्पॉन्डेंट संदीपन बैनर्जी जो है वो बता रहे हैं हमें कि केएल राहुल स्पिन के अगेंस्ट बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स में, और वो भी काफी अग्रेसिव बैटिंग शुरू है इंडियन बैटर्स की। तो और हाँ, केएल राहुल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ही इज रेडी टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर, और बिल्कुल मतलब वो उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि उन्हें अग्रेसिव खेलना है, जिससे हमें हिंट भी मिल रहा है कि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं और शुभमन गिल टॉप ऑर्डर पे रोहित शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ड्रीम टीम सुपर जायंट्स ने फिर से और एक क्वेश्चन पूछा है कि रोहित द्रविड़ प्लानिंग टू प्ले 4 स्पिनर्स। ये तो बड़ा मतलब रिस्की पिक भी हो सकता है, एक रिस्की चॉइस भी हो सकता है, रिस्क डिसीजन भी हो सकता है ये। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अक्षर पटेल, जडेजा एंड अश्विन will be the 3 spinners and कुलदीप यादव will miss out. जी बिल्कुल। और शुभ्रो पूछ रहे हैं यहाँ पे हाउ अबाउट गिविंग बोथ सिराज एंड उमेश एन अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ शमी। ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड इंडिया में बहुत सॉलिड है। जी बिल्कुल। उमेश यादव और एक्सपीरियंस, हाँ उमेश यादव भी। तो आई डोंट थिंक शमी को बिठाना सही होगा, या फिर बिठाएंगे इंडियन टीम। बट सिराज भी इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, और उमेश तो यादव का इंडिया में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, प्लस होम ग्राउंड है, तो इट गिव्स देम दैट एडवांटेज। किसी के लिए तो एक मतलब नाइंसाफी होगी, किसी को भी आप बिठा लो, वो डेप्थ ही ऐसी है हमारी। जी बिल्कुल। और व्हाइट हिल क्लासिकल पूछ रहे हैं हु हैज मोर चांसेस टू कीप केएल और केएस भारत। ये तो केएस भारत ही है, क्योंकि केएस भारत प्रोफेशनल कीपर है एंड रेड बॉल में कीपिंग करते आ रहे हैं आंध्रा के लिए रणजी ट्रॉफी में, तो वो कीपिंग करना ही सही रहेगा। देन केएल राहुल who hasn't yet kept in test cricket, I think। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केएल राहुल को तो ओपनिंग की तरफ ही ज्यादा उनको पुश किया जा रहा है, तो केएस भारत को ईशान किशन के साथ कंपेयर करें तो उतना मतलब कि ईशान किशन उतना अच्छा नहीं कर रहे, तो शायद रिसेंट फॉर्म भी खराब है ईशान किशन का, और रेड बॉल में इनका स्टैट्स भी ना सही है। हाँ, और अगर हम प्रैक्टिस सेशंस देखें तो केएस भारत हैज बीन कीपिंग इन द नेट्स पिछले कुछ जब से प्रैक्टिस सेशन शुरू हुई है। ड्रीम टीम सुपर जायंट्स का और एक क्वेश्चन आया है व्हाई वी इंडियंस ओनली फोकस ऑन स्पिन फ्रेंडली पिच, व्हाई कांट वी गेट स्टैंडर्ड पिच एंड देन ट्राई टू विन। बिकॉज हमारा मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, एंड ऑस्ट्रेलिया जो भी टीम अपने होम में टेस्ट खेलती है वो होम एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो तब हमें हमारी स्ट्रेंथ जैसी विकेट नहीं मिलती, तो जब हम इंडिया में खेल रहे हैं तो हमारे स्ट्रेंथ को हम बैक करेंगे एंड आवर स्ट्रेंथ इज स्पिन बॉलिंग। बट एक आयरनी भी है कि हम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, वो रिसेंटली थोड़ा, और साथ में ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लायन है एंड ही हैज टेकन 94 विकेट्स अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, व्हिच इज टेल्स अ लॉट अबाउट हिज कैलिबर। बिल्कुल। तो यही एक आंसर होगा हमारी तरफ से कि क्योंकि इंडिया के पास इतनी सारी स्पिन का टैलेंट है, आज भी हमारे पास स्क्वाड में 4 स्पिनर्स है ऑन द रेडी ऑन द गो। नेट्स में वाशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर्स भी हैं, तो बिल्कुल हम उस चीज का पूरा एडवांटेज लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस कंडीशंस से प्रैक्टिस करके आती है, ऑस्ट्रेलिया में जैसे पिचेस है, तो दे आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पिन, तो वो थोड़ा वीकनेस होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी एससीजी जो स्कब पिचेस है वहां पे भी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और किरण पाटिल पूछ रहे हैं केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलेगा तो क्या कीपिंग भी करेगा क्या? नहीं, कीपिंग तो केएस भरत को हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला कि प्रैक्टिस सेशन में भी केएस भरत ही कीपिंग कर रहे हैं एंड वो प्रोफेशनल कीपर है एंड रणजी में भी कीपिंग करते आ रहे हैं। तो रेड बॉल में जब आपके पास टर्निंग ट्रैक है, आपके पास 3 हाई क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अश्विन, जडेजा एंड अक्षर, यू वांट अ रिलायबल कीपर एंड दैट केस केएस भरत एक्सेल्स केएल राहुल। जी बिल्कुल। और आई थिंक संदीपन सर हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। तो हेलो संदीपन सर, वेलकम बैक टू द लाइव। Am I audible to you, sir? Hi, am I audible? Sorry for the inconvenience. Yeah. So yeah. Yes, you are audible. Loud and clear. थोड़ा ऑडियो का कनेक्शन का प्रॉब्लम, प्लीज गिव अस अ फ्यू मिनट्स। Hello, am I audible? Hello. I can hear you guys.
जी बिल्कुल, फिर से हमारा कनेक्शन ब्रेक हो चुका है संदीपन जी के साथ. We will continue taking the questions. तो KL Rahul going to play in middle order, is it confirmed? Confirm तो नहीं हुआ अभी तक कुछ भी इंडियन सिलेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से, बट KL राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खुद ही कहा है कि वो मिडिल ऑर्डर में बैट करना चाहते हैं. वो कंफर्टेबल है मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए, तो ही इज ओपन टू बैट एट 5, ये उन्होंने बोला है. तो हम देख सकते हैं कि केएल राहुल 5 में खेले. जी बिल्कुल. और ऋषि अजमेरा ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड संदीपन सर इज बैक विद अस. Yeah. Am I audible, guys? Not yet. Sir, I can hear you. I cannot hear him. Okay, I can hear you now, sir. I can hear you guys. Yeah. So, finally. Jadeja, yes. So Jadeja is back after a long injury break. How is he looking in the practice sessions? He's looking very proactive. He bowled for a long time. He was the one who actually, when Indian team was looking at the wicket, initially Rahul Dravid and Rohit Sharma went to see the wicket. But Jadeja was the third person to go there, and he also saw the wicket. Actually, as Steve Smith confirmed in the press conference today, there is a rough outside the off stump of a left-hander. So that is an ideal, area for Jadeja, someone like Jadeja or Kuldeep or Akshar. So yeah, there is the wicket looks dry from outside, and especially at one end, it is looked quite dry. So I don't think they will water the wicket anymore with the test match starting within next 48 hours. So yeah, it is going to be an interesting test match. Of course. Maybe a shortened test match. हम लोगों को शायद 1-2 दिन का छुट्टी भी मिल जाए. हो सकता है, क्योंकि जैसी पिच दिख रही है एक एंड से तो काफी खराब है शायद ऑलरेडी. अभी तो मैच भी नहीं शुरू हुआ है. तो वैसे केएल राहुल, स्टीव स्मिथ, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके काफी ब्रीफ किया है. दे हैव टॉक्ड अबाउट केएल राहुल टॉक्ड अबाउट हाउ the Indian team knows the pitches very well and is ready for like a full-on spin contest. How is India preparing in the nets? Matlab, Indian batters, how are they preparing against the spinners? That if the wicket turns from session of day one, then their batters inactive. Guys, am I audible? You were breaking up. Can you please repeat it? Yeah, so Steve Smith has said a very important thing in the press conference, that if the wicket turns from the first session of day one, then the Australian batters need to be proactive, because they cannot play the waiting game. In this kind of wickets, you have to maybe something like 300 is a par score, or as we call it, safe score in these kind of conditions. So they would like to get to the 300. Whether they are getting it in 90 overs or 80 overs or 75 overs, that doesn't count. So basically, what he was trying to say, that they will probably bat aggressively against spinners. So get a shade of fast ball probably from the Australian front team. Right. And Steve Smith, when we look at their practice sessions, how they have practiced so far in Bangalore? Australia had a look. Yeah, Australia, their training session, they were just warming up here. Their training session with India actually having just behind me. I guess Australians were just, they are just warming up. They are just coming into the scheme of coming into the grooves. Whereas Indian batters look very aggressive against spinners. I think they had an intensive session yesterday as well. Today they were Rahul, Virat Kohli, Shubman Gill, Rohit Sharma. All the batters are back. Right. And you're closely observing the practice. And another point I would like to, because I was getting a call, sorry. Another point I would like to mention,
that KS Bharat, he kept for a lot of kept wickets at the net. He's batting right now behind me. So it is probably, I think KS Bharat will get preference ahead of Ishan Kishan in the 10th selection. And Surya Kumar also batted. Sky also batted for a while at the nets, and he was playing his one day mode shots bowling. Right, and I was going to talk about that कि KS भारत भी काफी कीपिंग कर रहे हैं practice sessions में, and you're closely observing the practice. Who could be the keeper for India? Like you said, KS Bharat could be. We have lost connection with Sandeepan sir, but I'm seeing a very interesting question here from A Star. Australian players known for playing sweep shot against spinners most of the time. How can India counter this strategy? देखिए अभी जो ऑस्ट्रेलियन टीम आई है उसमें उस्मान ख्वाजा एक ऐसे प्लेयर है जो स्वीप का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एलेक्स कैरी है। तो इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो है रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं। और जो इन दोनों के अलावा एक और प्लेयर है। So, hello Sandeepan sir once again. जैसे अश्विन की बात हो रही है अभी कि he is one of the pinnacle of border Gavaskar Trophy. Have you had a chance to look at him in the nets? Yeah. He is bowling. He actually, the thing is, I think there's a question asked in the press conference today to say Steve Smith that whether Australia is overthinking about Ashwin, because the kind of you have rightly said that the kind of impact he has had over Australia in border Gavaskar Trophy, especially in India, is immense. And in Karnataka, when they had an Ashwin lookalike who bowls like Ashwin, at their net. So basically, I think Australia will be on their back foot when it comes to Ashwin. I wish I could show the practice session of the team, but due to copyright issues, we cannot show it. But yeah, Ashwin was looking very good. He was looking right on the mark. Right, he was bowling his variations. I was watching the net from close quarters. He was bowling his variations. He was actually instructing the batsman that मैं ये दूसरा डालूंगा खेलना, मैं ऐसा the batter was like playing and missing. Ashwin was trying to guide him कि क्या गलती किया उसने, पैर कहाँ गया. All these things he was talking in the net. So basically, and very proactive. Of course, Ashwin is one of the उनको कहा जाता है कि genius of the game, and without him it would be quite incomplete. This squad will be quite incomplete. But when you look at the spinners, we have Jadeja, we have Ashwin, Akshar Patel, we have Kuldeep Yadav, and a few more, I guess. In the nets we have Washington Sundar. We have Washington Sundar also. In the Washington Sundar we have Rahul Chahar. Yes. Who do you see playing in the squad? Look, it is hard to tell these days, especially with one more practice session left. But if you ask me, ideally, I would pick one wrist spinner and two finger spinners. My two finger spinners will be Kuldeep, because Australia have a lot of left-handers in their top 7 or 8. So we have someone like Jadeja whose ball will come. Someone whose ball will go out, and that is Kuldeep. And Kuldeep, if you see his record against Australia, he has played 2. He's done, I think, quite fabulous. He averages around 22 or something against Australia. In Sydney also he took wickets, and I think in his debut he got wickets. So I think I would prefer Kuldeep, but I am not sure about the team management, because there is a lot of trust on Akshar these days. If you have seen the Bangladesh Dhaka Test match, Akshar's impact with both bat and ball was immense. So doubt that they will drop Akshar, but ideally I think they should play Kuldeep. Of course. And thank you so much for joining us, Sandeepan sir. We will have you back, and thank you for joining us. Thank you. So हमने बात की है इतनी सारी ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि
रविचंद्रन अश्विन मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा स्वीप वाले सवाल पे, बैट्समैन तभी स्वीप खेलते हैं जब बॉल टू फुल होता है, तो या तो लेंथ चेंज करो या फिर एक मेक देम प्ले अगेंस्ट द टर्न, तभी काउंटर हो सकता है। जी बिल्कुल। और हाँ, स्टीव स्मिथ जैसे रविचंद्रन अश्विन, ये काफी बड़े थ्रेट लग रहे हैं मुझे स्टीव स्मिथ के लिए, क्योंकि भले ही वो कह रहे हैं कि आवर टीम इज नॉट ओवर थिंकिंग, और बट कहीं ना कहीं लगता है कि देयर इज अ सीरियस थ्रेट फ्रॉम अश्विन, क्योंकि उन्होंने स्पेशली, अगर आप बैंगलोर में जाके एक स्पिनर लाते हैं जिनकी एक्शन बिल्कुल रेप्लिकेट करते हैं अश्विन को, तो दैट इज डेफिनेटली अश्विन के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, और काफी ज्यादा सोच रहे हैं आप, जडेजा के भी बारे में सोच रहे हैं, अक्षर के भी बारे में सोच रहे हैं। तो लेट अस लुक एट द ऑस्ट्रेलियन training at Bangalore. We have a few clips and we'd like to show you guys. Yeah, I was going to start. His real name's Joseph. That's what threw me, because on that list when we're going out. Well, we had seen the practice session in Bangalore that Australia has had at a very dry wicket. They tried to replicate the kind of pitch. Yes, the kind of pitch they would have at Nagpur. And we'll take one final question and we'll bid adieu. So this is for you, Devashish. Sarfaraz Khan averages 80 in first class cricket, while Sky averages 45. Why is Sky preferred in the test squad given Sarfaraz has played फर्स्ट क्लास क्रिकेट मोर कंसिस्टेंटली? ये एक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया बीसीसीआई की तरफ, जो बीसीसीआई के ऑफिशियल ने लिया था कि सरफराज के 8 ओवर्स में रन नहीं थे। ये पहली बात है। जो मुझे लगता है वो ये है कि जब हम टीम्स पिक करते हैं, कहीं ना कहीं हम फॉर्मेट मिक्स करते हैं। जो सूर्य कुमार यादव का जैसे हमने उनको ओडीआई में बार बार ट्राई आउट किया, वो ना चलने के बावजूद हमने उनको खिलाया, तो वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पे भी। तो उनको टेस्ट में लाया गया है क्योंकि उन्होंने T20 में बहुत अच्छा खेला है, और ये भी हो सकता है कि शायद टीम उनको एक बहुत ही अच्छा स्पिन प्लेयर मानती हो, तो एज ऋषभ पंत नहीं है तो वो वॉइड मिडिल ऑर्डर में फील करने के लिए उनको लाया गया। जी बिल्कुल। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू टू एवरीवन हु हैज जॉइंड। Keep tuning in. We will be back with more content. काफ़ी सारा VGT के सराउंडिंग, T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो आएगा अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है 10 तारीख को, उसके भी सराउंडिंग काफ़ी सारा कंटेंट होगा वन क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पर। We have lots of press conference, training videos, everything you can imagine. So keep watching, keep tuning in. Thank you.